Thanks to with the science class. Yesterday we studied about the different methods of purification of water, in which we studied the three different methods. The very first method was boiling, which is a very common method of filtration of water. Then we studied filtration. In what happens in boiling, the water is allowed to boil at some time, which kills the germs present in it. Whereas filtration is the method in which water is filtered by some filter paper or muslin cloth, whatever. So, in this method, in filtration method, the dust and the dirt get removed, but germs doesn't get removed. Whereas in boiling, the germs get killed and gets suspended in the water itself. Whereas in filtration, the water gets purified by only removing the dust from it. Okay. And the third method was chlorination. Chlorination is done to the filtered water. Filtered water, in the filtered water, some small amount of chlorine is added to it, which kills the germs present in it. Okay. Today we'll study about the need for avoiding stagnation of water. That, let me share my screen with you people. Now see, what is the need for avoiding stagnation of water? What is stagnation of water? Stagnation of water क्या है? The water which gets stagnated, standstill water, water which is not moving, there is no movement at all, stagnate है एक जगह पे. That is called stagnant water. और ये है, it is a basic cause of many of the diseases. तो हमें ये stagnate water को avoid करना है. कहीं पे stagnation of water आप देखते हैं, तो try to avoid it. हम water को stagnate होने नहीं देंगे. क्या होगा? What will be the result for it if the water gets stagnated somewhere? See, dirty and stagnant water is a major cause of disease. It is the breeding place of mosquitoes. Such water is a breeding place of mosquitoes. You know, mosquito is the carrier of many of the diseases like malaria, dengue, chikungunya. And we cannot avoid it. हम इसे avoid नहीं कर सकते. ये हमारे भयंकर diseases हैं जो हो जाए तो बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है. और so mosquitoes spread disease like malaria, dengue, chikungunya, and we must take care of that. Water is not allowed to stagnate in cold and broken containers around our home. और ऐसा होता है, कोई मटका टूट गया, हमने छत पे छोड़ दिए, बारिश हुई, पानी जमा और वो वहीं छूटा रह गया. Boys and girls, you have to be very much careful about it. घर के अगल बगल कहीं भी water stagnant नहीं रहे, because stagnant water is a breeding place of mosquitoes. Okay. इतना ही नहीं, you need to change the water of the room coolers. Room coolers में जो water है उसको हर दूसरे तीसरे दिन change करना है. नहीं तो ये भी अगर स्थिर रह जाता, माने हमने 2-3 दिन पानी यूज नहीं किया, मैंने रात में यूज किया, दिन भर पानी stagnate रहा और पानी को नहीं बदला, what will happen? It will become a breeding place of mosquitoes. तो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमसे हर 2-3 दिन में पानी नहीं बदल पा रहे, तो do one thing. You put some oil, kerosene oil, which will keep the mosquitoes away. Smell से और इससे, और या फिर the kerosene oil will keep the mosquitoes away. Mosquito को वहां बैठने नहीं देगा. Okay, so it is being advised if you can not change the room coolers, water of room coolers very frequently, you have to add 2 spoons of kerosene oils, which will keep the mosquitoes away from it. Okay. Now, हमने पानी साफ किया, कहीं गंदे पानी को जमने नहीं दिया. Now, third important चीज, जो आपने पानी फिल्टर की, सेफ किया, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया, अब उसकी हैंडलिंग सही होनी चाहिए. माने बहुत पानी गर्म किया, बॉईल किया, ठंडा किया, फिल्टर किया, उसके बाद अगर हम उसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो, तो उस पानी का अगेन पानी खराब हो जाएगा, है ना. यानी हमने पूरा अच्छे से पानी को बॉईल किया, साफ किया, और उसको फिर मैंने गंदे से बॉटल में रख दिया, गंदे से पतीले में डाल दिया, तो what is the use of it? So now comes what is safe handling and storage of water. People often store water in earthen pots, their containers made of brass, copper and steel. हर के घर में पानी को रखने के अलग-अलग कंटेनर्स होते हैं. किसी के यहाँ पानी ब्रास के घड़े में रखा जाता है, किसी के यहाँ बॉटल्स में रखे जाते हैं,
किसी यहाँ स्टील के कंटेनर्स में रखा जाता है, और किन्हीं किन्हीं घर में तो इसे earthen pots, मिट्टी के घड़ों में भी रखा जाता है. ओके, तो यू कैन सी ओवर हियर पीपल आल्सो स्टोर वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर्स. हम लोग प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी लेके भी स्कूल आते हैं. बकेट्स में रखे जाते हैं, नहाने के लिए बकेट से पानी स्टोर किए जाते हैं. They are all these containers are made up of metals like aluminum or steel as well. Up proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away. हमने पानी को अभी बॉईल किया है, फिल्टर किया है. अब इसको अगर हम प्रॉपर स्टोरेज ना दें तो फिर जर्म्स फिर वापस आ जाएंगी एंड वाटर विल अगेन बिकम नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ओके, तो व्हाट विल यू डू फॉर द प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर? These are the some things, some proper some ways of how to store water. Na? Some ways of proper storage and safe handling of water are listed below. क्या क्या है? Water should always be stored in clean and covered containers. हमेशा ध्यान रखें, पानी को हमेशा clean and covered containers में रखें. Okay? Next, we should never dip our hands in water stored for drinking purpose. जिस पानी को हमने पीने के लिए रखा उसमें कभी भी अपने हाथों को, उंगलियों को नहीं डालना है, बिकॉज दीज आर द कैरियर्स ऑफ जर्म्स. अभी हमारे पास कोरोना में क्या कहा जा रहा है? कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स. बिकॉज हम कहा कभी अपने सरों पे हाथ देते हैं, कभी किसी पेपर को उठा लेते हैं, कभी कोई कागज छू लेते हैं. they all can contain germs, so we should never dip our hands into the water which is made for drinking purpose. Rather, we should use a ladle. अब देखेंगे इसी पेज में एक उस दो बच्चियां हैं, एक बच्चे ने जो कंटेनर है उसको कवर कर रहा है, और दूसरा बच्चा जो है वो लैडल से पानी निकाल के दे रहा है. बहुत बहुत सारे बॉटल आजकल तो बड़े बड़े कैंडल्स जो होते हैं उसमें टैप बने होते हैं ना, या फिर हमारे मॉडर्न फिल्टर्स में भी टैप होते हैं. सो दैट वी डू नॉट use the water, we do not touch the water. So we should use a ladle or some other clean utensils to take out water from the container. The last one is we should never, कभी नहीं पिए आप वो पानी जो बहुत दिनों से स्टोर्ड हो. पानी हमेशा फ्रेश पिएंगे. We should not drink water that has been stored for many days. Okay, next. Thus, we realize that we not only need to conserve water, but make sure that water which is used for drinking is clean, pure, and potable. कह रहा है क्या कि हमारा लास्ट चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, है ना? कह रहा है कि ये हमसे ये पता चलता है इस लेसन से कि हमें सिर्फ पानी कंजर्व ही नहीं करना है. जो पानी हमें पीना है, you want water which we are using should be clean, pure, and potable. तो वी मस्ट इंश्योर, इस चीज का हमें एकदम श्योर करना है, श्योरिटी रखनी है कि जो हम पानी पी रहे हैं वो साफ है, क्लीन है, प्योर है एंड पोर्टेबल है. लेट अस इंश्योर दैट वाटर दैट इज मेंट फॉर टू हेल्प अस डज नॉट गेट पोल्यूटेड. इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो पानी पीने के लिए है उसको हम क्या नहीं करें, पोल्यूट नहीं. Okay, so this was all about the keywords. एक बार पढ़ लेते हैं. Filtration. What is filtration? A method for removing dust and other suspended particles from water. Germs क्या हैं? Extremely small living beings can cause diseases. कीटाणु कहते हैं इसे, जीवाणु भी कहते हैं. छोटे सारे लिविंग बींग जो हमें डिजीज कॉज करते हैं. देखेंगे अभी तो आप अभी जर्म्स बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा जानता है जर्म्स क्या होता है. पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. Purification. What is purification? The method by which we purify something, we clean something. And stagnation of water, stagnant water, standing or still water. We'll do the exercises. Something to do. Water which is fit for drinking is called potable water. Potable. Groundwater is not fit for drinking because क्यों? Groundwater क्यों सही नहीं है पानी पीने के लिए? Because जब तक ये ऊपर आता है, it contains dust and germs. Okay? Dash removes dust from water. कौन सा मेथड dust को remove करता है? It is filtration. Dash and dash kills germs present in water. Chlorination and boiling kills germs present in water. अभी बताया था आपको, a small amount of chlorine डालेंगे, germs मर जाएंगे. पानी को boil करेंगे, germs मर जाएंगे. Okay, so chlorination and boiling are the two methods by which we kill the germs present in water. Water should always be stored in. Water कैसे store करेंगे? Should always be stored in clean and covered utensils. Okay. Now come to true and false. We should always store water, drinking water in covered and clean and
क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, सही, ट्रू। हमें हमेशा पानी को क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स में रखना चाहिए। वी कैन ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज, कभी नहीं, नो। जो पानी बहुत दिनों तक जमा हो उसे हमें नहीं पीना चाहिए। वी नीड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, यस, ट्रू। वी कैन अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर होम, नो। यूज ladder to drink out water from containers, सही। हमें पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, rather ladle यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लिक द करेक्ट ऑप्शन। Germs present in water may be killed by, कैसे किल करेंगे? Simple filtration, no. Storing it in covered containers, कभी नहीं। Store it for many days, क्या germs बढ़े कमेंगे? वो अपने बढ़ेंगे। Last, chlorination, सही जवाब है chlorination। By drinking unclean water, one would get disease like, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो कौन सा डिजीज होगा? मलेरिया? नहीं। डेंगू? नहीं। चिकनगुनिया? नहीं। ये तीनों के तीनों डिजीज मस्कीटो बाइट से होते हैं। इट इज जॉन्डिस। नेक्स्ट, dust and other suspended particles present in unclean water can be removed by, dust और other suspended particles को कैसे हम रिमूव करेंगे? ओनली बाय फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग से तो dust जाएगा नहीं, फ्रिज में रखेंगे तो भी नहीं होने वाला है। क्लोरीनेशन से अगेन इट विल किल द germs. आंसर इज फिल्ट्रेशन। लास्ट, अ बॉडी रिक्वायर्स एंड यूजेस वाटर फॉर, हमारे बॉडी में वाटर का रिक्वायरमेंट क्यों है? ब्रीदिंग, पानी की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फूड, जरूरत है लेकिन हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है। ट्रांसपिरेशन, अगेन जरूरत है वाटर की लेकिन हमें प्लांट में है, हमें जरूरत है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। आंसर होगा डाइजेशन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। वी विल डू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास। अब तक आप ABC करेंगे कॉपी में, and I hope everybody is being a good student will complete their work. Okay, students, bye and take a proper care of yourself.